In continuation of last lecture, the factor PV upon RT is known as compressibility factor Z. So, PC VC upon RTC can be treated as compressibility factor and can be obtained by reciprocating the equation 15, that is PC VC upon RTC is equal to 3 upon 8 is equal to 0.375. So, whether a gas is behaving according to van der Waals equation or not can be verified with the help of equation 16. If the values of critical compressibility of the gas is 0.375, it means the gas is van der Waals gas. Next, we will come to the next point, relationship between critical temperature and बॉयल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर्स और बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन. ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है. क्रिटिकल टेम्परेचर को आपको मालूम है TC से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बॉयल टेम्परेचर को अपन TB से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन आपस में क्या रिलेशनशिप है ना, उसी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे. विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर boil temperature can be calculated. From this equation, TC is equal to 8A upon 27 RB. क्रांतिक ताप जो था, क्रिटिकल टेम्परेचर जो था, क्या आपने कैलकुलेशन किया था van der Waals इक्वेशन से जब हमने निकाला था, तो TC किसके बराबर आया था? TC इज इक्वल टू 8A अपॉन 27 RB. ये आपको निकालना आता है, किस तरीके से निकालते हैं, है ना. एंड TB मीन्स बॉयल टेम्परेचर बराबर A अपॉन RB. A और B van der Waals कांस्टेंट, R is a gas constant. This is the equation number 2. So, dividing the equation 2 by equation number 1. So, we get TB upon TC is equal to A upon RB into 27 RB upon 8A is equal to 27 upon 8. जब डिवाइड हो जाएगा